kela, arbi, nimbu, anar, palak, mirchi, gulab. Hey guys, welcome back to the channel. My name is Swapno and this is Sarah. So today is Monday, but it feels like Sunday because it is Labour weekend in New Zealand. Labour Day is a public holiday for us, which is awesome because we get a 3-day weekend. And yeah, Labour Day, I think it's actually celebrated around the world. Do you have it in India? I don't know. I don't think so. Maybe. It celebrates and commemorates the achievement of the 8-hour workday, and apparently, I just learned from Google, that New Zealand was one of the first countries in the world to actually shift to an 8-hour workday, and it was one of the first places to honour workers' rights. So thankfully, we get a holiday. So we've got a bunch of projects planned. True to form, most Kiwis actually do a heck of a lot of work on Labour weekend. It's traditionally the first weekend of summer, and so most people use it as a chance to get into some DIY and tackle those backyard projects that you've put off for like the entire winter. Yeah, so that's our agenda for this afternoon. बस सबसे पहले a very thank you to all you guys out there कि आप लोग ने इतना प्यार भेजे, सब्सक्रिप्शन भेजी, इतने प्यारे कमेंट्स लिखे हैं आपने हमारे लिए. सो थैंक यू वेरी मच. वी रियली अप्रिशिएट दैट. बहुत खुशी होती है कि ऐसे कमेंट्स पढ़ने से मोटिवेशन मिलती है. सो इसीलिए हम एक और वीडियो बना रहे हैं सो दैट वी कैन थैंक यू गाइज एज वेल. एंड काफ़ी कैजुअल वीकेंड है ये, तो घर पे ही टाइम स्पेंड किया. आपको पता होगा हमारा नया डॉग भी आया, तो फिर उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं. एंड बिकॉज उसका ख्याल रखना है. इज़ ओनली 9 weeks old now, सो बाहर ज़्यादा निकल भी नहीं सकते उसको छोड़ के. सो वी स्पेंडिंग टाइम एट होम, वेरी कैजुअल. घर के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, काफ़ी सारे DIY प्रोजेक्ट्स. सो विल शेयर इट विद यू गाइस. Yeah, thanks so much. We so appreciate all your support and your love and sending it back to you. And yeah, we'll do our best to keep creating engaging content. So yeah, let's get stuck in. So as you can see in the pan, our backyard has had a massive transformation recently. We're in the process of working with landscapers / builders. Sean's his name, and he has been working with Swap to redesign our front yard actually. Swap knows more about this. He's our project manager on this, so he can tell you what we are planning. Swatch New Zealand Abhiyan. So what's going on today? अभी तो फ़िलहाल सफाई चल रही है. I'm just sweeping all the clay and the dirt right now. Actual projects हमारे weekdays में शुरू होते हैं, from weekdays Monday to Friday, but because today is Monday and it's Labour weekend, so I'm just clearing it up for the builders. तो कल आएंगे वो वापस. and हमारा project involve करता है retaining wall, soil removal and fencing. तो अभी रिटेनिंग वॉल बिल्ड हो रही है, फेंस आधी बिल्ड हो चुकी है अलॉन्ग विद गेट्स. तो फेंसिंग का प्रोजेक्ट इसलिए था क्योंकि हमें ऑब्वियसली शैडो जैसा बड़ा होगा, और वो जर्मन शेपर्ड है, ही इज़ गोना बी अ बिग डॉग. तो उसके लिए हमने फेंसिंग का प्रोजेक्ट था ताकि ही डजंट हैव टू स्टे इनसाइड द हाउस, ही कैन रोम अराउंड इन द बैकयार्ड, प्ले, एंड यू नो इट्स नॉट वेरी गुड टू कीप द डॉग ऑलवेज इनसाइड द हाउस. तो इसलिए हम फेंस बिल्ड कर रहे हैं ताकि वो जंप करके निकल ना जाए और बाकी लोग को हाय हेलो ग्रीटिंग करने के लिए. एंड यू नेवर नो पीपल लोग कैसे होते हैं कि उसको मार दे करके या कुछ भी हो सकता है ना. तो इसी चक्कर में हमने फेंसिंग का प्रोजेक्ट था हमारा. तो यहाँ पे फेंसिंग हो रही है हमारी और वहाँ पे फेंसिंग हो रही है. बट उसके साथ ही बिकॉज मेरी रिटेनिंग वॉल एक चीज़ होती है जो सॉइल को रोकती है. सो ये बहुत पुराने टाइम की रिटेनिंग वॉल थी. ये ऑलमोस्ट 30 to 40 years ओल्ड है. इट्स नॉट इवन होल्डिंग द सॉइल. तो हमने ये वाली नई रिटेनिंग वॉल लगवा रहे हैं यहाँ से थ्रू, बिकॉज सॉइल फॉल ना हो करके. तो रिटेनिंग वॉल बन रही है एंड देन उसके ऊपर फेंसिंग हो रही है. एंड इवेंचुअली मैं और दिनेश हम दोनों मिलके ये डेक बनाएंगे खुद. हम ये प्रोजेक्ट खुद कर रहे हैं और ये प्रोजेक्ट मैं बिल्डर्स के साथ मिलके उनके साथ हेल्प कर रहा हूँ. हैंडीमैन जैसा काम है मेरा.
Yo, so while Swap has been working with the landscapers to transform the structural elements of our place, I have challenged myself to a couple of little garden projects recently. Our garden is like bought huge, so it takes a lot to maintain it, and I've been trying to like just get into the routine of like Tuesday and Thursday evenings setting myself little projects to get on with. I've got a nice little flower garden growing that I am pretty happy with because it's starting to take shape, so I'll show you a couple of shots of that, and then we are going to go and see my karo patch. That is my project for this weekend. So yeah, hey hamara lavender, and here is my little nascent, slowly growing flower garden. You can see that some of our little lobelia plants are coming up, and there is a lavender that I actually need to give some food because it's struggling with the heat, but I'm pretty stoked because some of my wildflowers are growing, and particularly because my kawa plant is planted. This is like New Zealand katulsi. It is one of the Māori medicinal plants, but yeah, pretty much like our local version of tulsi. And now let's go and see my karo patch. Jaldi. Yay, hamara karo patch. This is my project for the weekend. I started yesterday and I just like mapped out my basically garden plot with the bricks, so I just measured it. I actually just used the piece of wood that you can see lying here to get some relative measurements and kind of just estimated, and then using my math teacher abilities, and yeah, then I just made sure as well, one thing that's really good to do if you're planning a garden bed is to make sure that you leave enough space around the edges so you can walk around it, so over this side, or that you can mow around it, because it's like frustrating if you want to mow down the side when the grass comes back and you can't fit. So we just leave a gap here between the fence so I can walk between the fence and the karo patch. Well, what will be the karo patch. Hey, so we're sitting under the tree enjoying some nimbu pani, and we thought we'd finish this video off with a challenge. So guys, so ये challenge क्या है? Sarah ये idea के साथ आई थी this morning, and उसने बोला कि we wrap this video up with a funny challenge. ये challenge क्या involve करता है कि हम दोनों को एक मिनट मिलेगा हमारे गार्डन में क्या क्या चीज़ें हैं, हमें हिंदी में बताने उनके नाम. प्रॉब्लम ये है कि मैं हिंदी में तो नाम बता दूंगा, बट मेरे को ये नहीं पता गार्डन में क्या क्या चीज़ें हैं. गार्डन में ये ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है और इसको हिंदी के भी नाम पता है. तो अब देखते हैं क्या होता है. तो हम दोनों को एक मिनट मिलेगा कि गार्डन में क्या क्या चीज़ें हैं वो हमें हिंदी में नाम बताने उनके. So let's see how we go. So guys, Sarah पहले जा रही है, so it's her turn. So her time starts now. Kela, abi, nimbu, anar, palak, mirchi, gulab, genda, fool, suki grass, jungly grass, kadu, kutta katati, karipata, tulsi, सौंफ. यार मेरे लिए भी तो छोड़ दे कोई. सारी बातें बोल दी. पुदीना, एक और 15 हो गए तेरे. what else? पुदीना और मौसम और मौसम. गार्डन में मौसम. चल टाइम हो गया. Okay, so I have set the standard and the bar is pretty high. So now it is Swapnil's turn. But the deal is, because obviously, Hindi first language, right? So he cannot say any of the things that I have already named. Are you ready? Yeah, I think so. Okay, your time starts now. डब्बा, लकड़ी, पत्ती, हवा, पेड़, और क्या है भाई? पाइप, मतलब हिंदी. हथौड़ा, कील, नेल, कील. और क्या है भाई? कुल्हाड़ी. जल्दी, 25 seconds. बाल्टी, केला. Yeah, I said केला. You said केला? अच्छा. पुदीना. You said पुदीना. अरे यार. -2. चल यार जान ले बच्चे की.
हो गया आउट मेरे साथ 5 5 seconds. 5 seconds. Go. I'll give you 5 seconds more. 5. टमाटर Yeah. What is tomato in Hindi? टमाटो Tomato. टमाटर What is lime in Hindi? नींबू How can lemon and lime both be nimbu? हम वही Answer खाते me हैं। this thing. Answer me this thing. I have this. This is confusing me. हमारे इधर नींबू ही मिलता है भाई। हाँ, okay. 5, 4, 3, 2, 1. Cut off. चलो भाई आई गिव अप। हो गया भाई कितना हो गया 7 हो गए मेरे इसके 16। चलो कोई नहीं पहली बारी थी आगे आगे रखेंगे ऐसे कंपटीशन Yes. देखते हैं। I have Abhi, one. now I have to get back to you now. I have one. Okay, your turn. Next time you have to come up with some challenge then. Okay. So guys, that was us. It was a very casual weekend. जैसे पहले बताया. Once again, thank you very much for sending so many loving comments. Yeah. It really motivates us and determines us to keep making these videos. We thought we'll just make this video as a thank you video to you guys. There was no plan of going outside exploring New Zealand as we love, because as we said we have a little puppy in the house. We just give us a few more weeks till he's the right size and he's had all his vaccinations, so he can go outside and explore the country with us. So बहुत plans है. Summer तो अभी शुरू ही हुई है. Labor weekend के टाइम पे summer शुरू होती है न्यूजीलैंड में. So अभी summer शुरू हुआ है and then वो बहुत सारा नॉर्थलैंड से लेके रोटोरुआ, मिडल ऑफ द कंट्री, वाइकाटो, बहुत सारी रैगलन, कोरोमैंडो. Oh yeah, we'll have to go to Raglan. We always go to Raglan every summer. It's really beautiful. बहुत सारी ब्यूटीफुल स्पॉट्स है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट न्यूजीलैंड के लगा लो. सो जाएंगे एक्सप्लोर करेंगे हमारे लिटिल न्यू फैमिली मेम्बर के साथ. सो एंड आपके साथ शेयर भी करेंगे. सो खुश रहो और एंजॉय करो.